Hi Talaal, welcome. Very good to have you here. Welcome to Thank Kickstart's you so much. podcast. Thank you for the invite. First of all, how do you find the experience so far? Future Fest पे अभी तक how's it going? So, alhamdulillah, it is very pleasant. फुटफॉल काफ़ी अच्छा है और बड़ी देर बाद इस तरह के इवेंट दोबारा होने शुरू हुए हैं पाकिस्तान में. सो देयर वर कपल ऑफ फेसेस जिनको मैं 2-3 साल बाद मिल रहा हूँ. सो इट हैज़ बीन अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. Okay, so let's start off with your introduction. Let's tell the audience a little bit about yourself. Okay, so my name is Talal, born and raised in Lahore. Currently, I'm working for Deel. It's a US-based company. I'm working as product partnerships manager for the global team. So deal की क्या deal है? Tell us about that. सो डील की डील ये है कि इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म जो कंपनीज को इनेबल करता है रिमोट जाने के लिए. सो इट प्रोवाइड्स यू द रिमोट इकोसिस्टम ऑफ कंप्लायंस एंड पे रोल. सो फॉर एग्जांपल, अगर एक US बेस्ड कंपनी हो पाकिस्तान में, उनको पता है मैंने एक अली बंदा है जिसको हायर करना है. सो उसके लिए इनिशियली उनको अपनी एंटिटीज़ ओपन करनी पड़ती थी. उसके बाद HR का बंदा रखना है, टैक्सेशन के लिए बंदा रखना है, पूरा बिजनेस ऑपरेशन सेटअप करने पड़ते थे. तो डील हैज़ क्रिएटेड 170 एंटिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब. सो विद इन 5 मिनट्स इफ़ यू हैव अ टैलेंट दैट यू नीड टू हायर, आप डील के सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको लेजिट कॉन्ट्रैक्ट्स उस मुल्क उस स्टेट के हिसाब से भेज सकते हैं, उसको हायर कर सकते हैं, उसका पेरोल रन कर सकते हैं. सो वी हैंडल द कंप्लायंस एंड पेरोल पार्ट ऑफ द ग्लोबल हायरिंग. राइट. सो उसके लिए आपका लाइक इट्स मोर ऑफ अ सेंट्रलाइज सिस्टम, या अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा पाकिस्तान में और आपकी कंपनी दुबई या लेट्स से कहीं पे मलेशिया भी. में, सो ऐसा सो इट सो वर्क्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्लेटफॉर्म. सो अगर मैं एक पाकिस्तानी बंदा और मैंने आज यूके में बंदा हायर करना है, या तो मैं उधर अपनी एंटिटी सेटअप करूं, ठीक है, और बिजनेस ऑपरेशन सेटअप करूं, या मैं डील जैसे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन क्रिएट करूं, अपने आप को KYC वेरीफाई करवाऊं, और विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स व्हेन आई हैव द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन, मैं उसके ईमेल पे उसको यूके के हिसाब से जिस भी वो उस शहर में है या जो भी स्टेट कहते हैं हम, उसके हिसाब से उसका लीगली कंप्लायंट कॉन्ट्रैक्ट उसको भेज दूँ, वो एक्सेप्ट कर ले, और फिर यूके में जो भी उसके मेथड्स हो सकते हैं, रेवोल्यूट हो सकता है, बैंक ट्रांसफ़र हो सकता है, पेयोनीर हो सकता है, वो हिसाब से अपनी सैलरीज विड्रॉ कर सकता है. सो ठीक है. इट्स मोर लाइक फॉर कंपनीज दैट वांट टू गो रिमोट, हम उनको वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, so it sounds like a bit of a tech forward thing obviously. So how does that work in Pakistan? Is it viable here? अभी चल रहा है? So it's मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि डील हैज़ अबाउट 10,000 customers. These are paying clients, I would say. Nike, Notion, Reddit, Coinbase, they use Deal's platform to hire across the globe. Pakistan is one of our like top 15 markets, जहाँ पे दूसरी छोटी कंपनीज भी, कंपनीज जिनके शायद 10 एम्प्लॉयज़ हो, 50 एम्प्लॉयज़ हो, जो पाकिस्तान में इंजीनियर्स को डायरेक्टली हायर कर रही हैं. Right. So पाकिस्तान इज़ लाइक अ वेरी lucrative market, obviously. Okay. And sorry to cut you, and there are companies that are from Pakistan also hiring people abroad. So it also works the other way around. अच्छा, that's very interesting to hear that it's also working the other way around. Surprisingly it is, or it's happening very good and very fast. अच्छा, so since you're involved in all of this, how did you get here? Like, what was your journey all the way Oh to my Deal? god. So this is going to be a long question. So जर्नी में आपको कहाँ से सुनाओ, आप मुझे बता दें. जहाँ से आपको लगे कि एक सही पाथवे बन रहा है, now I can explain everything. So I will start from, so I was before Deel, I was at a company for 4 months, and before that I was at Careem for 5 years. Okay. So Careem में I served multiple roles. Brand reputation, शुरू का रोल मेरा operations का था. फिर I launched a sub brand called Careem Erupt, जो VCs और incubators के साथ काम करता था. उसके बाद I launched Careem Engineering for MENA region, that was built Careem's engineering brand, तो ताकि वो different local markets में engineers hire कर सकें. So I spent like good fortunate years at Careem, but I felt like मेरा 5वां साल kick in हो रहा था कि I need some change. Obviously. So things are stagnant. I would wake up, I know मैंने करना क्या है, and it's becoming boring. And I absolutely love Careem till now, right? But it was not kicking enough for me. So I took a 2-month sabbatical. I went to US, एक प्रोग्राम हो रहा था Draper University का, and that gave me a thought कि यार मैं कर क्या रहा हूँ. So what are the next steps? How do I evolve in my career? So I was looking for next companies जिनको मैं देख सकता हूँ, जहाँ मैं काम कर सकता हूँ. And for me the question was, मुझे Careem जितनी एक अच्छी cultural relevant company चाहिए थी जो अपने employees को employees नहीं colleagues समझती हो. So that was my next big thing कि कहाँ से वो company मिलनी है. So I started looking for remote jobs. Y Combinator की एक website है,
वर्क विद अ स्टार्टअप. उसमें YC की सारी वेब कंपनीज लिस्टेड होती हैं वहाँ पे जो रिमोट हायर कर रही है, दूसरी हायरिंग कर रही हैं. आई सॉ दिस कंपनी डील, इनका लोगो भी दूसरा था, 50 बंदे भी नहीं थे उस वक्त कंपनी में. आई अप्लाइड. A week later, the founder Alex, he reached out to me on LinkedIn. I was surprised कि यार this is good कि एक अमेरिकी कंपनी का फाउंडर है, उसने मुझे रीच आउट किया है. और मुझे नहीं पता था मैंने किस रोल पे भी अप्लाई किया, टू बी ऑनेस्ट. मैंने सिर्फ देखा था रिमोट है, कर देते हैं. सो once he replied back, मेरा जब प्रोसेस शुरू हुआ, I was still at Careem, I guess. अभी मैंने sabbatical नहीं लिया था, सॉरी. So प्रोसेस शुरू हुआ. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट के EOR मॉडल क्या होता है, PO मॉडल क्या होता है, ये करते क्या हैं, ग्लोबल हायरिंग है क्या. एंड इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज करीम के लास्ट 3 साल मैं रिमोटली काम कर रहा था. सो आई वाज रिमोटली रिपोर्टिंग टू दुबई टीम, जर्मनी टीम. सो दिस इज ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. दिस इज कोविड टाइम्स. या दिस इज 2021. ठीक है, सही है. सो काम उस तरह चल रहा था, सब सही. मेरा प्रोसेस जो था, सो बीच में दोज नेक्स्ट 3 months Deel went super aggressive. They became a unicorn. They did another fundraising. They become a $5.5 billion company. Wow. They did a rebrand. और मेरा जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो लेट हो रहा था. So हर महीने एक इंटरव्यू होता था, फिर वो गायब हो जाते थे. Eventually जब मैं US से वापस आया, I thought कि मैं करीम छोड़ने लगा हूँ और यहाँ yes होने वाला है. This is July 2021, I guess. उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो रोल ही हमने ख़त्म कर दिया, हम उस रोल के लिए हायर नहीं कर रहे. But I had my mind कि if not Deel, I'm leaving. So I resigned from Careem without having a job, just to see अब मैंने करना क्या है. In the next 10 minutes, I got a message from a recruiter from Turing that we are hiring for a role. Would you be interested? I was like, अल्लाह की तरफ से सारा कुछ हो रहा है. I replied back to Divya. और ट्यूरिंग का मुझे पता था फ्रॉम कासिम who's the founder of remote base. So उसने बहुत ट्यूरिंग मेंशन किया था, तो आई न्यू ओके दिस इज सम कंपनी. आई डोंट नो हाउ मुझे किस तरह मुझे वो पसंद आएगी नहीं आएगी, बट आई सेड ओके लेट्स एक्सप्लोर. सो पूरी दुनिया से टैलेंट मार्केट प्लेसेस करना चाह रही थी. I gave the interview. Before my last day at Careem, I had the job at Turing. So I left Careem on 1st of October 2021. 4th of October was my joining for Turing. So Turing मैंने join की. मेरे दिल में डील का बड़ा दुख था because I have seen them from 50 people company. Now they were like a 300 people company. और मैं आधी टीम जो मेरे इंटरव्यूज ले चुकी थी उनको मैं देख रहा था कि it sounds like a very exciting journey to be on with them. Exactly. और होता ये है कि ट्यूरिंग वाले कहते हैं कि भाई आपको सैलरी भेजनी है, आप डील पे अकाउंट बनाओ. so that was a pinch to me. मैंने कहा यार नहीं, I need to get into this company. Turing was good. I reported to a team based in New York and Seattle. मगर स्टिल उसमें वो देसी कंपनी की फील थी. ठीक है, सही है. ठीक है. So apparently there was a job opening from the manager who took my last interview at Deel in the last course. I dropped him a LinkedIn और उसने कहा ठीक है ये टेस्ट स्कोर करो. तब तक मैं डील को इतना अच्छे से निचोड़ चुका था कि मुझे पता था क्या उन्होंने देखना है, करना है. सो आई वेंट थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस. आई गॉट इट अप देयर इन लास्ट ईयर इन जनवरी. आई जॉइन डील. सो सॉरी फॉर द लॉन्ग स्टोरी. No, but it's very interesting and I really admire the relentless pursuit of what you really wanted. That's so interesting to hear. Achha, so what do you think is next for Pakistan in tech? Yeah, what do you think is next in the startup sphere? Like last year we had a lot of fintech spring up. Isi tarah, what do you think is coming up next for Pakistan and what's next for you? So 2-3 सवाल ज़्यादा हो गए. मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ. So आप और प्लीज़ रिवाइज द क्वेश्चन अगेन if I'm getting deep track. Absolutely. So पहला सवाल है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान. अगेन अगर आप पिछले 2-3 साल देखो तो एकदम स्टार्टअप बबल आया था. बिल्कुल. मेरे करीम के एटलीस्ट मेरे ख्याल से अली स्टैंडिंग ओवर हियर, वी नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी हैव वर्कड सो क्लोजली, दे वेंट टू रेज $3 million, $4 million, $10 million, $15 million, $25 million. The money was pouring in, right? And the ideas were fantastic. The teams have been fantastic. And you feel at some point कि यार हर कोई पैसे रेज कर रहा है, क्या चल रहा है, मैं भी कर सकता हूँ. And I know people that I felt that they would never raise good money. They are very capable enough people that are running good companies now. So एकदम since पिछले 8-9 महीने जो fluctuations global markets में आई हैं, आपके trends एकदम change हो गए हैं. They are saying अमेरिका में कभी भी अगले 8 महीने में 6 महीने में दोबारा से layoffs अभी दोबारा आने हैं. सही. So dynamics एकदम जो unit economics थे, जो VCs देखते थे, वो change हो गए. So एकदम अब वो funding नहीं आ रही. But on the other hand मैं ये कहता हूँ कि
Pakistanis right now who are doing global businesses in talent marketplaces, in probably outsourcing businesses, या दूसरे retail businesses, they are now more focused on profit margins instead of growth. So the mindset is right up over there, and eventually मेरे ख्याल से VC circles चलते इस तरह से हैं कि they would somewhere around when they are collecting that money तो उन्होंने वो पैसे deploy भी करने हैं. So probably 6-8 महीने का phase और है, साल का phase और है, दोबारा से circles, eventually everyone would see those fundings happening again. So ये भी हो जाएगा. But one thing that I see that Pakistanis, and again like companies like Turing, Andala, Remote Base, Deel, these have enabled remote work. So a lot of companies जो अमेरिका में है या इंडिया में है या यूके में है, दे आर हायरिंग पाकिस्तानी टैलेंट, पेइंग देम इन डॉलर्स. एक तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, और दूसरा व्हेन यू वर्क विद ग्लोबल टीम्स तो आपका लेवल ऑफ एक्सपोजर इज डिफरेंट. तौर तरीके डिफरेंट है, इनकम्पैरेबल टू व्हाट पीपल वुड. एग्जैक्टली. सो मेरे ख्याल से द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाउंडर्स would also be coming from this side of people who are working with remote companies and probably gaining more knowledge of how to function and work out organizations. So यहाँ से वो एक अच्छा आएगा. So मेरे ख्याल से again the future, other than the मेरे ख्याल से geopolitical situations, the future is bright. और पाकिस्तान हमेशा से इस तरह चलता रहे, आगे भी शायद इसी तरह चलता रहे. But again the youth is resilient और hopefully इंशाल्लाह बेहतर टाइम आएगा. ठीक है. इससे just reminds me of another question that a lot of young people would want to know, okay, how do you look for remote jobs? Is LinkedIn the best platform? And the other thing is, what sort of skills are these recruiters looking for? Like, what do you think the youth should be working on right now? What is next? ठीक है. So इसको मैं 2 parts में divide करूँगा. So one thing is, what are recruiters looking for? मेरे ख्याल से अगर बिल्कुल ही कोई यूनिवर्सिटी से बाहर है, जिसके एक्सपीरियंस के ऊपर 1-2 कम हैं, उसको शायद रिक्रूटर, शायद आई माइट बी रॉन्ग, अप्रोच ना करे. बिकॉज रिक्रूटर्स, जो सीनियर रिक्रूटर्स होते हैं, वो बड़ा फोकस जॉब देख रहे होते हैं कि बंदे ने एक सर्टन रोल में काम किया हो, सर्टन एक्सपर्टीज़ हो. सो जो भी आपके अगर रोल्स हैं उनको आप देखें कि अगर आप लिंक्डइन पे ही बैठे हुए आप उनको किस तरह ऑल्टर कर सकते हैं. सो माई लास्ट टाइटल एट करीम वॉज डेवलपर रिलेशंस मैनेजर. ठीक है. That's very specific. That's very specific. और ये मैंने करीम से खुद रिक्वेस्ट करवा के लिखवाया था. पता नहीं क्यों, मुझे क्या सोचा हुआ था मैंने. There is a weird story behind this. So जब हम करीम इंजीनियरिंग लॉन्च कर रहे थे, I could have gone with brand manager for this, but I picked up that because Google में ये टाइटल था. So I always used to think कि अगर मैंने Google में घुसना है, so developer relations is my roadway to Google, because मीना में भी उस वक्त डेवलपर रिलेशंस का बंदा नहीं था. अगर आप आज से 3 साल पहले गूगल करते, अब कुछ कंपनीज ओपन करना शुरू कर दिए. सो आई पिक्ड अप दैट पाथ दैट कुड हैव क्रैश्ड माय करियर, बट इवेंचुअली क्रैश होते होते बच गया. बट इवेंचुअली लाइक मैंने उसको फिर उस जेडी को उस हिसाब से शेप किया, क्योंकि ट्यूरिंग एक डेवलपर सेंट्रिक कंपनी, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे. बट जब उन्होंने कीवर्ड डेवलपर रिलेशंस मैनेजर डाला, उनके आगे प्रोफाइल आई एंड दे रीच्ड आउट. It worked out. It worked out, and it worked they out, found right? you. Yes. So मेरे ख्याल से अपने जो आप जेडी है, जो रोल्स हैं, उनको स्पेसिफाई करें, उनको मेंशन करें कि आप क्या करते हैं. सेकंड थिंग ऑफ रिमोट जॉब. सो राइट नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, अ लॉट ऑफ कंपनीज जो रिमोट जॉब्स दे रही हैं. सो एक तरीका है कि मैं सर्च करूँ रिमोट कंपनीज कौन सी हैं, मैं उनकी वेबसाइट पर जाऊँ, आई पुट एन आई ऑन देम एंड सी के ये कंपनीज हैं जो रिमोट जॉब्स दे रही हैं, एंड आई स्टार्ट अप्लाइंग on those jobs. Second है, there are a couple of, if you just search like remote jobs, platform for remote jobs, बहुत ज़्यादा platforms हैं जो अब खाली remote jobs list करते हैं. For example, weworkremotely.com है, और इस तरह के 10-12 और हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, but if you just Google, वो आ जाते हैं. उस पर रेट्स भी लिखे होते हैं, और essentially नहीं कि आप उधर अप्लाई करें. आपको एक बार पता लग गया कि ये कंपनी रिमोटली करती है, मेरे ख्याल से आप हायरिंग टीम को, फाउंडर को हमेशा लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं. एक चीज़ जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, इफ़ यू वांट टू रियली वर्क फॉर अ कंपनी, यू शुड बी ओपन इनफ टू रीच आउट टू फाउंडर्स, बिल्ड अ केस फॉर यू के व्हाई यू रियली वांट टू वर्क फॉर दैट कंपनी, एंड थिंग्स वर्क आउट. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है 100 बंदों को करेंगे, शायद 80 जवाब ना दें, 90 जवाब ना दें, शायद 10 या 5 1-2 दे दें. सो प्रॉब्ली लाइक यू नीड टू ओपन, अनलॉक योर ओन डोर्स. राइट. Syed, that is a very interesting answer. I think what's insightful, especially for younger people who might not be aware that this is the
this is an ideal way to take basically because बिल्कुल everybody ऐसे. else is using the same old route, so it's important to have your बिल्कुल options ऐसे. open. And again, like I feel like remote jobs are getting more common because of the platform. So I'll just give you an example. ट्यूरिंग का पता था और पूरी दुनिया आपको भी पता होगी. सो रिमोट डेवलपर बॉडी सेलिंग डेवलपर की कर रही है. इट्स वर्किंग आउट. सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड मार्केटर हायर जो डेटा और मार्केटर्स को सेम पिच करता है. सो इट्स लाइक अ यूनिक थिंग. इफ अगर मार्केटिंग के लोग रिमोट जॉब्स देख रहे हैं, एक साल का गिग देख रहे हैं, दैट पेज देम इन गुड डॉलर. सो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंगेज कर रहे हैं. सिमिलरली आई स्पोक विद अ फिलीपींस बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी थी जिन्होंने फिलीपींस में एक ऑपरेशन बेस सेट की हुई थी और वो सपोर्ट के लोग ऑन गुड डॉलर रेट्स ढूंढते थे. सो वंस दीज टैलेंट मार्केट प्लेसेस आर बीइंग स्प्रेड आउट, अगेन नीश वर्टिकल्स बनते जाएंगे और eventually पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है. Win-win situation Win-win for situation है for everyone. us. Yeah. Just before we sign off, my last question is what is next for you? So next is Deel, inshallah. My plan is to stay here for a while, learn from the people. I love the product, or the experience has been great so far. So the company is ever still growing. और ज़्यादा verticals हैं जो हमने touch करने हैं. We recently launched an API partner program. So I was leading that. For me, it was super tough, but like eventually you overcome those things and then you feel happy कि कर लिया, आगे भी कर लेंगे. So the road is tough, but like if you're liking this, loving this, it works out well. So hopefully Deal still for some while. Okay, that is Inshallah, great. yeah. Thank you so much Thank for you so your much. time and thank you for the very valuable input and insights. Thank I'm you so sure much. everybody It will was a really pleasure. benefit. Thank you. Thank you.